थोड़ा और अच्छे से बनाया जाता है, ऐसे भी बनाया जाता है। अच्छा, इसमें फिर भी हम देखते हैं आपने सारा किया है या नहीं किया है। बनाया तो ये आपने खुद का ही है, ठीक है, ये बात तो सही है ना। लेकिन इसमें देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ एसएन रखा है, राइट जैन। यस सर। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा भी और रिएक्शन होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। सर वो सर मैंने मैप में इंक्लूड नहीं करा। नहीं नहीं, तो मैप में तो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ होंगे, ठीक है। ओके सर। उसके बाद आपने सिर्फ एक ही भेजा है, ये अभी आप अभी लिखा है क्या आपने, सही बताइएगा। आई हैव टू सेंड मोर फोटोज। अब तो भेजिए सर। देखिए मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे, तो इसी वजह से आप लोगों को पहले कह दिए थे कि बना के रखिएगा उसको। I don't know where it is. Okay. यार बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। आपको हमने क्लास से पहले ही बोला था भेजने के लिए, अगर आपने बना लिया था तो आपको भेज देना चाहिए था क्लास से पहले। आई डोंट नो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर द क्लास। Sir just came from prayer, so didn't get time. I was going to send before the prayer. That time I was eating food. जैसे ही बना आप उस वक्त तो भेज ही सकते थे ना, जैसे ही आपने लिख लिया तो। Yes. यू हैव अ फोन ना ऑफ योर ओन, यस और नो। जैसे ही बना पैसे भेज तो सकते थे। चलिए अब रहने दीजिए, ओके। Okay, sir. और आप ये सही बताइए, आप अभी लिख रहे हैं क्या? Uh, so just sending it. वो हम नहीं पूछ रहे, जस्ट सेंडिंग तो नहीं। देखिए ज्यादा सही चीज नहीं है ना, आप चार हाँ, पांच अभी हाथ से। अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैंने पहले से लिखी। तो फिर आप एक ही फोटो भेजें, एंड इट हैज बीन लाइक कितना, 15 मिनट हो गया क्लास को स्टार्ट हुए। लाइक एक फोटो भेजने में कितना टाइम लगता है? हाउ मच टाइम शुड आई वेट सुजैन? So you can start. I'm just sending. नहीं नहीं, वो सेंड, आप सेंड करने में इतना टाइम नहीं लगता है ना सर, आपकी बात मतलब व्हाई आर यू सेइंग दिस, आई एम जस्ट सेंडिंग यू। आप कुरियर तो नहीं कर रहे हो ना? No seconds. तो फिर आई एम आस्किंग हाउ मच टाइम विल इट टेक टू सेंड अ फोटो? So just give 2 minutes. 2 minutes? Why 2 minutes? So it's taking time to do. तो I am taking PDF and sending. नहीं नहीं, पीडीएफ क्यों बना रहे हैं हम? तो हमने कहा फोटो खींचिए, फोटो भेजिए, फोटो भेजने में उतना टाइम भी नहीं लगता है। स्मॉल बहुत छोटा फाइल होता है फोटो का।
Okay. नहीं, फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन ना दो चीज तो आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट ऑल्सो. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट. फर्स्ट थिंग इज IUPAC nomenclature. In IUPAC nomenclature, you have to know IUPAC nomenclature. अगर आपको पास IUPAC nomenclature, if you don't know how to convert IUPAC names to structure, तब आप, I would suggest is that you don't even attempt the conversions, because उसमें आपको क्या लगेगा, you will feel that I don't know anything about organic chemistry. If you don't have an expertise in IUPAC nomenclature, that means you are not able to go from name to structure, then don't start it. Okay. And now I will be assuming that you all have expertise in IUPAC nomenclature, that you can go from name to structure easily, at least for the simple names जो commonly used इस्तेमाल names होते हैं ना, at least how many carbons are there, वो सारी चीजें आप कर लीजिएगा. Okay. Then the reaction maps. Why the reaction maps are initially important? Reaction maps are important because उससे आपको ये पता चलेगा that I have to know all the reaction in order to complete this. This reaction map, which is on the paper right now with you, it should be in your mind on your exam. जब आप exam दे रहे होंगे तो all of these reactions, they should be in your mind. Okay. And now, whenever you are doing questions, one other thing that you have to keep in mind, you have to look for patterns. Now, also see, there are 30 questions in which 2 are repeated. Okay, so there are 30 conversions. Okay, conversions 30 है हमारे पास. Why are you sending physical property? Zaid? So I think you wrote their physical and chemical properties. Think का क्या मतलब है? पढ़िए क्या लिखा है हमने. Sorry, chemical properties. छोड़ी हुई आप मत दीजिए, आपने नहीं किया, ये तो आपकी स्कूल का काम लग रहा है हमको. ठीक है, लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं, रिएक्शन मैप नहीं है, भले ही आज आपको कन्वर्जन हम सारा करा दें, आएगा नहीं आपको कन्वर्जन, दैट इज फॉर श्योर. ओके, इवन इफ यू हैव इट, अगर आपके पास रिएक्शन मैप है तभी आप पैटर्न समझ पाइएगा, तभी आप नोट डाउन भी कर पाइएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. ठीक है. सो रिफत, हैव यू, डिड यू मेक द रिएक्शन मैप? यस रिफत, टेल मी. Sir, I got confused. तो पूछा आपने हमसे, हमने क्यों है व्हाट्सएप नंबर फिर मेरा? यस रिफत, बताइए क्यों देके रखा है व्हाट्सएप नंबर हमने? Sorry, sir. हम Saw it today मतलब morning. क्या चीज रिफत बताइए. We saw it today morning. सॉरी, सॉरी बोल रहे हैं? हाँ. अरे सॉरी क्यों बोल रहे हैं आप? सॉरी, आप सॉरी आप मत बोलो, लेकिन देखिए ये सब गलतियां ना प्लीज रिपीट मत कीजिएगा. लाइक दीज आर द थिंग्स, आपको नहीं आ रहा हो, आप भूल जाओ कोई चीज, ठीक है ना, आपको 10 बार समझाना पड़े तो अलग अलग तरीके से हम समझा देंगे, लेकिन दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब जो कि हमको सच में जिसमें गुस्सा आता है. देयर आर थिंग्स, आपको कोई चीज रोक तो नहीं रही है ना मैसेज करने से, राइट, बट आप फिर भी डाउट नहीं पूछ रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा? एंड देन यू आर वेटिंग फॉर द क्लास टू हैपन, उसके बाद आप डाउट बोल रहे हो कि सर हम नहीं समझ पाए. तो यही गैप को कम करने के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं. ठीक है रिफत? Yes. आई थिंक टुडे शायद आपने नहीं किया है होमवर्क, ठीक है ना, सो डोंट सेंड मी द पिक्चर्स. ओके ओके आयशा, आयशा यहाँ नेपाल घूम रही है, बताइए. ठीक है, कीजिए आज कन्वर्जन है ना, कीजिए. देखिए बहुत बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइजेशन होगा अगर कन्वर्जन आप लोग को नहीं आया, तो हम ये बात बिल्कुल बता रहे हैं आपको. रिएक्शंस लिख रहे हैं, रिएक्शन आपके दिमाग में नहीं है, आपके देखिए नोटबुक में तो होगा नोटबुक, लेकिन आप लोग इतना तो पढ़ते नहीं है कि आपको एक एक रिएक्शन बताओ कि कहाँ पे हो, कम से कम एटलीस्ट, है ना. ये मान लीजिए वुड्स रिएक्शन, तो कौन से पेज में है वुड्स रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होता है या नहीं होता, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू नो, अदरवाइज कन्वर्जन में कोई फायदा नहीं होगा. और ये चीज तो हमने आपको जब केमिकल प्रॉपर्टी, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे ना, जब प्रिपरेशन कर रहे थे उसी टाइम बोला था कि रिएक्शन मैप बना के रखिएगा.
ये आपने आज तो नहीं लिखा है सर, ठीक है ना, तो छोड़िए, आप क्यों ही भेज रहे हैं हमको पता नहीं। ओके, लेट अस स्टार्ट। आई एम रियली अपसेट बाय द वे, ओके, रियली अपसेट। जब आप लोग को बोल दिया जाए कोई चीज ना, स्कूल है आप लोगों का, फिर भी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। Sir, do we have हाँ to make it like we made for haloalkanes? हैलोजेंस के लिए तो हमने एक बार इसके लिए किया था ना, In class. के लिए, like I made like this alcohols है, then you can make haloalkanes from it using this reagent, right? Like Then, that only we have to make. No? sorry, Like that only we have, like yeah, that like pattern. that, yeah, correct, you have to make it like that only. And also देखिए, आप structures मत बनाइएगा वहां पे, okay? That is also what I said in class, that you don't make the structures like this. अक्सर आप reaction आप देखेंगे, इसी वजह से हमने बोला था कि इंटरनेट से मत छापिएगा। इंटरनेट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि R, इंटरनेट में आपको क्या मिलेगा, ROH है, उसका इन्होंने रिएक्शन कर दिया SOCl2 से, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया RX। वो हमको नहीं जानना है, स्पेसिफिक्स जो होते हैं ना रिएक्शंस के, वो हमको नहीं जानना। आई जस्ट वांट टू नो द क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल से हैलोअल्कीन में कैसे जाता है, तो यू हैव टू डायरेक्टली आपको अल्कोहल लिखिए। ये भी बैरियर होता है कि यू हैव टू से दिस इज ROH, देन यू हैव टू इन योर माइंड कन्वर्ट दैट, ओके फाइन, ROH इज अल्कोहल, ओके। तो देयर इज अ वेरी लिटिल बैरियर व्हिच इज प्रेजेंट, वो भी हमको नहीं चाहिए। I also don't need that. I just want you to write alcohol से haloalkene के लिए क्या क्या तरीके। Then if you have alkene, then क्या क्या तरीके। In alkene, obviously you will be writing what? You will be writing HBr, okay, and then Markovnikov and anti-Markovnikov, दो चीजें हैं। तो आपको सीधा समझ में आ जाए कि Markovnikov और anti-Markovnikov दो चीजें हैं। चल ठीक है, आज हम करते हैं, है ना। क्लोरोइथेन to ब्यूटेन। सबसे पहले what we will do? We will make the structures. We will make the structures of chloroethane and then butane. So what is chloroethane? Chloroethane is CH3, CH2, Cl. And what is butane? Butane is CH3, CH2, CH2, CH3. यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो कि this is also now, it's going to be a pattern from now. You can see that here we have 2 carbon atoms, here we have 4 carbon atoms. So whenever you are having doubling, whenever there is double number of carbon atoms, then somewhere in the reaction, somewhere in the process, somewhere in the conversions, you will be doing Woods reaction. Woods का मतलब क्या है? Woods reaction for haloalkene, या फिर आपके पास Woods fatigue होगा, या फिर fatigue होगा if you have only haloalkene. That means you will be reacting this, there will be a reaction in which sodium and dry ether will be used. ठीक है? Now this is very simple reaction. इसमें आपको बस क्या करना है? You have to add Na and dry ether, and you have got the product. Yes or no? याद है किसी को रिएक्शन? ये बताइए, वुड्स रिएक्शन याद है किसी को? हनीफा, रिफत, जैद? Yes. Yes. ठीक है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन से। और अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई हैव डन हियर इज आई हैव रीअरेंज्ड दी जो क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में, देयर आर 30 क्वेश्चंस, इसमें से 2 रिपीटेड हैं। सो टोटल मिला के हमारे पास वी हैव जस्ट 28 क्वेश्चंस व्हिच आर देयर, यूनिक 28 कन्वर्जन्स। एक तो आपके पास बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल, देयर आर टू रिपीटेड वन, सब बता देंगे जब आएगा, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा। ओके, I have arranged this 28 in such a manner that they follow a pattern. Just for example, chloroethane or butane, sodium and dry ether. See the next question. 1 chlorobutane. This is butane, and here we have 1 chlorine atom. 2 N-octane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many carbons here? 4 carbons here. How many carbons here? 8 carbons here. We have a, what do we have here? We have an alkane, again, sodium into and dry ether. Can you see this? Yes or no, please tell me. Yes. Yes. And see, now I have taken the conversions only which are one step. ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे नहीं, इस वजह से एनसीईआरटी में आपसे कन्वर्जन्स होते नहीं है। ओके, तो आई हैव गिव देम इन 1 स्टेप वाले, फिर 2 स्टेप वाले, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। डन? डन, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन है, देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या है, बस एक कॉम्प्लिकेशन आया, 2 क्लोरोब्यूटेन, या 1 2 3 4 हो गया। Here we have chlorine,
and you have to convert this to 3,4 dimethyl hexane. अब ये देख रहे हैं nomenclature से कितना फास्ट आपको आना चाहिए. Yes or no? Can you see that? Yes. पहला बैरियर क्या है? nomenclature है. nomenclature नहीं आता फिर नहीं आएगा. Okay, let me erase this thing. Now 3,4 dimethyl hexane will be, we have hex here, so 1 2 3 4 5 6, and we have 1 2 3 4 5 and 6, so 3 and third one and the fourth one, right? Here we have CS3 and here we have CS3. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास फिर से कैसे कितना है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 4 अगेन 8. जब भी आपके पास डबल हो जाए ना कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यू ट्राई डूइंग व्हाट, वुड्स रिएक्शन, सोडियम एंड ड्राई ईथर. ओके, अगेन यहाँ पे देखिए आपके पास this is the carbon atom containing Cl, right? The carbon atom containing Cl. इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए, राइट? सो दिस इज द व्हाट रिएक्शन यू विल गेट, सोडियम एंड ड्राई ईथर. ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए. पहले 4 से 8 हो रहा है जब भी, whenever you are doubling the number of carbon atoms, you will try this Wurtz reaction. And now you try to name it 1 2 3 4 5 6. So this is also what, this is CS3. CS3, this is the main chain here, right? This is the main chain. Again, this is what, 3,4 dimethyl hexane. लिख रहे सबको ये सोलो पीसल नहीं? Yes, Rifat, Hanifa, Zaid. Yes. Sodium and dry ether. Simple reactions, one step reactions here, okay? लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Now you see the importance कि सोडियम और ड्राई ईथर कन्वर्जन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, बेंजीन टू डाइफेनाइल reactions, I think we have done this in class only ना. ड्राई ईथर में सोडियम एंड ड्राई ईथर ले लेंगे. ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? Yes. कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4. तो देखिए आपके पास 4 out of 28 questions of conversions are from Woods और सिमिलर आप लिख सकते हैं क्योंकि ये फिटिक रिएक्शन है, राइट? यानी 4 में से like 4 out of 28 is all it is having this reagent Na in dry ether, right? Na in dry ether. ठीक है, तो 14% लगभग हो जाएगा ये. 14, हाँ, अराउंड 14% ऑफ दिस क्वेश्चंस किससे आ रहा है? एक ही आपके पास रिएजेंट है, सोडियम एंड ड्राई ईथर. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए आप, ब्यूट 1 into ब्यूट 2 in. क्या है? ब्यूट 1 into ब्यूट 2 in. स्ट्रक्चर बनाइए. ब्यूट 1 in, आपको कहां पे जाना है? ब्यूट 2 in में जाना है. देखिए, अगेन यू विल सी अ पैटर्न. यहाँ पे अगेन यू विल सी अ पैटर्न. No problem, Aisha. No problem. Bute 1 into bute 2 in, है ना? So whenever you have 1 से 2, right? 1 से 2 हो रहा है. There is a change of place. एक place का difference है. You have a difference of how many places? 1 place or 1 position or 1 number. Okay. So whenever you have this, somewhere in the reaction, somewhere in the conversions,
मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव विल बी यूज्ड। ओके, कैसे देखिए, व्हेन आई विल रिएक्ट दिस विद लेट अस से HBr, नाउ इफ इट इज सिंपल HBr, और आल्सो वन मोर थिंग, ये देखिए आप, ये कहाँ पे है आपके पास, दिस इज इन द टर्मिनल, और यहाँ पे आपके पास मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स है। ओके, यू हैव मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस ना, यू विल बी फॉलोइंग मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम मोर लेस सब्स्टिट्यूटेड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड, है ना, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स है, so whenever you are going from less substituted to more substituted, Markovnikov rule आप लगाइए, and let us see the product what is going to be। HBr लगाएं, so simply we will get HBr on the more substituted carbon atom, the Br will be attached here। Further what I will do, I will do alcoholic KOH। Why alcoholic KOH? Because I want to make an alkene, I want to make an alkene। Whenever I have to make an alkene, अब यहाँ से आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, right? You will get one product which is this plus one product which is this, right? Now this will be major, और यही आपको चाहिए था। तो पहला रीजन क्या है आपके पास, HBr, प्लेन HBr, और अगर आप बहुत ज्यादा कंसाइज होना चाहते हैं, यू विल राइट HBr in dark, okay, HBr in dark, then alcoholic KOH, and you will get this as major product। This is but 1e, this is but 2e। So number 1 HBr in dark, number 2 alcoholic KOH। ठीक है, डन। Yes. देखिए फिर से यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपीन, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, तो एक डैश होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन से क्या यहाँ जाना है हमको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, प्रोपेन में जाना, प्रोपीन से प्रोपेन में जाना, तो प्रोपेन बना दिया हमने। यहाँ पे आ गया आपके पास Cl और 2 क्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया CH3, यहाँ पे आपके पास आ गया CH3, ठीक है। सो वी हैव जस्ट एडेड अ क्लोरीन एटम, कुछ तो और क्या नहीं हमने यहाँ पे, have we done anything else here? Tell me, कुछ भी किया है यहाँ पे हमने? जी हनीफा, रिफत, बताइए क्या रिएजेंट इस्तेमाल होगा यहाँ पे? कहाँ से जा रहे हैं, एल्कीन से हमको कहाँ जाना है, हेलो एल्कीन, So can I? आपका आंसर हमने देख लिया, एल्कीन से हेलो एल्कीन जा रहे हैं, क्या होगा, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा? अरे पेजेस फ्लिप कीजिए, सोचने से कुछ नहीं आएगा, स्ट्रक्चर देखते रहने से भी कुछ नहीं आएगा। गो टू द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, या एल्कीन पार्ट में जाइए, रिएक्शंस देखिए, कुछ समझ में आएगा फिर आप। Yes, Rifat and Hanifa. Aisha, do you have your notes? Aisha, do you have your notes? Yes, sir. Okay. Flip some pages. Go to the portion where we have done preparation of haloalkane from alkenes. Yes, Rifat, आप बताइए। 7 minutes. Hanifa. Yes, Hanifa. नगमा पे मेरी पुरानी वाली नोटबुक कहाँ है जो खत्म हो गई थी? एल्कीन वाले पोर्शन में आ गए आप, हम आपको ये करते हैं ना, आई विल गाइड यू देयर।
Yes, Rifat and Hanifa, are you there in the alkene portion? Yes. What is the first reaction? Reaction. Heading topic बताइए, topic क्या लिखा हमने? Reaction of alkene with topic भी आपने लिखा है. Magnesium. Alkene का Sir. प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन में जाइए ना. हैलो एल्कीन प्रोडक्ट में है तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन में जाइए. इसी वजह से यही देखिए, इसी वजह से बोल रहे थे रिएक्शन मैप होना चाहिए. कम से कम ये तो पता हो कि प्रिपरेशन और सारी चीजें क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन क्या होता है, सब कुछ. फ्रॉम एल्कीन्स एक टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्कीन में. फ्रॉम एल्कीन्स हनीफा एंड रिफत नहीं है आपकी नोटबुक में? हाँ यार ना, जल्दी बोलिए ना, आपको मिल नहीं रहा. यस रिफत. H. यस. Addition of hydrogen halide. क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या एडिशन हो रहा है ये बताइए आप. इसमें और इसमें क्या फर्क है? We have here how many carbons? 1, 2, 3 carbons है हमारे पास. 1, 2, 3 and 4 carbons. Here also we have 1, 2 carbon, third carbon and 4 carbon. What have we added here? Tell me. क्या लगा है? Cl. Cl लगा है ना? तो एल्कीन से हैलो एल्कीन जाने के पहला रिएक्शन बताइए क्या है? How will we add Cl? क्या लगाएंगे हम बताइए? रिएजेंट क्या इस्तेमाल होगा? HBr. Br लगाएंगे तो Br लग जाएगा ना. Sir, HCl. Yes or no? Yeah. तो क्या यूज करेंगे? HCl. समझ में आ गया? Yes. रिएक्शन मैप होता तो ये आपको ढूंढना नहीं पड़ता रिफत. yes or no? Yes. है ना? What about Hanifa? Sir, I said HCl, but I think you didn't listen. हाँ नहीं सुने दिया होगा हमको, पक्की बात है फिर. ओके. ब्यूट 1E2 देखिए यहाँ पे भी आप देखिएगा. सो हियर आल्सो वी हैव जस्ट एडेड. यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सीधा इट इज Markovnikov addition, nothing else. But 1 into N-butyl iodide. But 1E to N-butyl iodide. And here we are having iodine. बताइए ये कैसे होगा? Please remember, if I will use HI, then I will be making I will be making 2 iodobutane, है ना? I will be making 2 iodobutane because the addition takes place in the more substituted carbon atoms. यहाँ पे iodine लगेगा. So what we will do first? सबसे पहले इसको याद करेंगे HBr, है ना? हमको कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाना ना. I have to put here. So there should be, if I have to put a haloalkane, if I have to put a halogen atom on the terminal carbon, then I have to use anti-Markovnikov. HBr in the presence of what? Peroxide. HBr in the presence of peroxide, I will get Br here. Then I will further do a reaction, NaI, sodium iodide, Finkelstein reaction, halogen exchange method of preparation, halogen exchange method. Okay, and I will be getting iodine. ठीक है? So see, alkenes से हमारे पास how many questions we have? But 1E, 1, 2, 3 questions till now, in which we have either used Markovnikovs or anti-Markovnikovs. Okay. So don't we have to add acetone? Acetone solvent होता है भाई. Yes. Acetone solvent होता है, reagent नहीं होता है.
एसीटोन की जगह आप कोई भी ऐसा सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसमें पानी ना हो, बिकॉज वी आर हैविंग हियर सोडियम आयन, दैट इज व्हाई। सो यू कैन आल्सो टेक ड्राई ईथर यहाँ पे भी। But please remember, when you write Finkelstein reaction, na, Finkelstein reaction, you have to write acetone when you are defining that named reaction, because named reactions are like laws, like Finkelstein ने जैसे reaction किया होगा, you have to write it in that way only. So if he has used acetone, you have to use acetone only. You cannot use any other solvent there when you write the reaction. But when you are doing some conversions, so conversions आपके हाथ में, you can have different solvent than what Finkelstein used, if it is possible to have that. Done? लिख लिया आप लोगों ने? Yes or no, please tell me. Yes. 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रो, देखिए फिर से 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, जब भी आपके पास 1 और 2 आया, ये याद रख लीजिए मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव कहीं ना कहीं पे आएगा। लेट अस सी 1 ब्रोमोप्रोपेन, Br से कहां जाना है हमको? 2 ब्रोमोप्रोपेन, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सिंपल अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH से क्या बन जाएगा? आई विल गेट एन एल्कीन। एल्कीन के बाद फिर से क्या करा देंगे? HBr एंड डार्क। क्यों डार्क में कराया हमने? बिकॉज आई want Br on that carbon atom which is having more alkyl group or which is having less number of hydrogens. Br यहाँ पे आ गया। Fourth reaction, right, in which we are using Markovnikov or anti-Markovnikov. Yeah. See, देखिए sequence ऐसे ही बनता है। What you saw that okay 1 and 2 are there, so Markovnikov or anti-Markovnikov it will be used somewhere, है ना? And since we are making a bromine atom which is on the more substituted carbon atom, then Markovnikov's addition will be done. For Markovnikov addition, I need alkene. To make alkene, I need alcoholic KOH. बस, this is the pattern that you have to follow. 1 and 2 देखा, Markovnikov or anti-Markovnikov, and you saw that okay fine, जो भी हो Markovnikov or anti-Markovnikov, I have to have alkene. If I will have to have alkene, then I have to react this with alcoholic KOH, and after that only I can do either Markovnikov or anti-Markovnikov. बिल्कुल same देखिए how they have played here. 2 bromopropane to 1 bromopropane. यहाँ पे Br है 2 bromopropane to 1 bromopropane. Bad. So he tends to do opposite. एक सेकंड रुक जाइए, पूछेंगे, सबसे पूछेंगे, इतनी हड़बड़ी की बात नहीं। Now answer me in chat. This is more substituted carbon atom, this is less substituted carbon atom, so we'll either have Markovnikov या we will have anti-Markovnikov. Send the answer in chat. Markovnikov होगा या anti-Markovnikov होगा? Send the answer in chat. Waiting for Hanifa, Rifat, Aisha. Yes, Hanifa. Don't know? Hanifa, Rifat, and Aisha, tell me that I got your answer correct. Okay, Hanifa. Rifat and Aisha waiting for you. Correct, Hanifa. Very good. Yes, Rifat, correct. Aisha waiting for your answer. Now, you have recognized that I need to use Markovnikov or anti-Markovnikov. If I want to use Markovnikov or anti-Markovnikov, I need to have alkene. So what is the reagent I will use to convert haloalkene to alkene? Alcoholic KOH. Then I will be using HBr in the presence of peroxide.
And what I will get? I will get Br. Fifth reaction with Markovnikov or anti-Markovnikov. Fifth reaction with Markovnikov or anti-Markovnikov. हनीफा एंड रिफत समझ में आ रहा है अब आप लोग को? ये सुनो प्लीज टेल मी. Yes. Yes, sir. ओके. आयशा, व्हाट हैपेंड टू यू? आप नेपाल घूम रही थी, आपने कोई मतलब लगता है लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, राइट आयशा? Yes, sir. कंप्लीट कीजिए भाई, छुट्टियां हैं. आप 11th 12th की छुट्टियां जो होती है पढ़ने के लिए होती है, घूमने के लिए नहीं होती हैं. Actually, it was an emergency, so my dad को मतलब जाना पड़ा था काम से ना. अच्छा, आपकी आवाज ही तो बहुत धीमी आ रही है. अच्छा. ओके. एवरीवन डन? यस और नो प्लीज टेल मी. हो Yes. गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला दिक्कत पता है क्या है आप लोगों को? टर्शियरी ब्यूटाइल पता ही नहीं क्या होता है. ओके, कन्वर्जन से दूर की बात है. यू विल हैव टू नो व्हाट इज टर्शियरी ब्यूटाइल एंड व्हाट इज आइसोब्यूटाइल. टर्शियरी, व्हाट इज टर्शियरी ब्यूटाइल? 4 कार्बन है टर्शियरी मेथड में. ऐसे हियर वी हैव 4 कार्बन एटम्स. This carbon here, 1, 2, 3, 4. 4 carbon atoms are attached in such a way that they make a tertiary carbon. They have at least one tertiary carbon. So you have third butyl bromide to isobutyl bromide. Iso is this group. Iso. This is what iso. यहाँ पे अगर आपके पास attachment हो जाता तो ये this will be what? This is isobutyl. यहाँ पे आप लगा दीजिए Br. This is isobutyl bromide. Isobutyl bromide. Now they have asked you a question here, which seems like it is not Markovnikov या anti-Markovnikov होगा या नहीं होगा. But what I will do, I will write this whole thing here. इन्होंने पूछा क्या है यहाँ पे. So you have here 1, 2, 3 carbon atoms. So this will be 2 methyl, or rather it will be 2 bromide, 2 bromo, 2 methyl. This is my main chain, okay? This is my main chain. 2 methyl, 2 bromo, 2 methyl propane. यहाँ पे अब इसको देखिएगा. So this is my main chain. Okay, this is still my main chain. And what I am having here, I am having 1, 2, 3. So here we are having 1 bromo, 2 methyl propane. तो इन्होंने कॉमन नेम दे दिया, बट कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? 2 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? 1 में. बताइए, मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव? कैन यू सी नाउ? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. आयशा, हनीफा, रिफत, जैद. Yes. राइट. Yes. तो नाम में कंफ्यूज करना चाह रहे हैं बस, लेकिन रिएक्शन वही है. 2 ब्रोमो से 1 ब्रोमो. मार्कोनिकॉव या एंटी मार्कोनिकॉव? प्लीज राइट इन चैट. Markovnikov or anti-Markovnikov? Again, when we need Markovnikov or anti-Markovnikov, I will have to have an alkene. Is that correct? Alkene hoga. And for alkene I need alcoholic KOH. यहाँ से देखते पहले. First reaction will be with alcoholic KOH. I will make all of these carbons are same, so I will have, let us say, किधर बना है? ऊपर वाले में बनाते हैं. Okay, so here you have CH2. यहाँ से फिर यहाँ जाने के लिए
HBr peroxide. Sixth reaction using Markovnikov or anti-Markovnikov. Done? हाँ guys, done. इसलिए आप लोगों ने रिफत, हनीफा, आयशा. Yes, sir. 1 minute. 1 minute, okay. Yes, sir. Okay. रिफत आप लिख रही हैं क्या? Yes, finish. Finished? Okay. देखिए 2 में आई एक ग्रुप लगा हुआ था प्रोपेन के, अब प्रोपेन के फर्स्ट में एक ग्रुप लगा हुआ है, फिर से क्या होगा? मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव. बताइए क्या होगा मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव? टू से 1 जा रहे हैं. टू क्लोरोप्रोपेन आपके पास ये होगा. ये है ना, तो 2 से 1 जा रहे थे. प्रीवियस में भी तो आपके पास 2 से 1 जा रहे थे, उससे पहले भी हम लोग 2 से 1 जा रहे थे. क्या यूज किया था हम लोगों ने? क्या यूज किया था हम लोगों ने? मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव? Sir, anti-Mark. एंटी मार्कोनिकॉव ना. यस हनीफा, एनी डाउट? No, sir. नो ना. देखिए अब इसके बाद जो है ना एंटी मार्कोनिकॉव मार्कोनिकॉव चाहिए हमको. क्या चाहिए पहले? सबसे पहले तो आई हैव टू मेक एल्कीन. तो पहला रिएक्शन जो होगा आपका अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH से यू विल मेक डबल बॉन्ड. उसके बाद व्हाट विल बी यूजिंग HBr in the presence of what? In the presence of peroxide. इससे हम लोग को मिल जाएगा Br on the first carbon atom. अब ये तो बहुत ही आसान है, aqueous NaOH. ठीक है, बस देखिए एक स्टेप बढ़ा है आपका. कैन ऑल ऑफ यू सी दैट? यस और नो? बट ये रिएक्शन आप लोग को याद होना चाहिए. मतलब हाइलोएल्केन से अल्कोहल का रिएक्शन तो बहुत ही फेमस है. हम लोगों ने ये भी किया हुआ है कि why do aqueous KOH it gives alcohol and alcoholic KOH it gives alkene. So can you see the reactions which were important in the theory, they're also important in the conversions. Alcoholic KOH एक reaction, 2 reaction, 3 reaction, 4 reaction, 5 reactions. So at least in the 5 reactions that we have done till now, we have seen alcoholic KOH. Anti-Markovnikov Markovnikov का तो ये 7th reaction है. This is the 7th reaction out of 28. Can you see out of 28 we have till now done 7 reaction in which Markovnikov or anti-Markovnikov additions are used. Done all of you? Yes or no? Please tell me. Done. Yes. Done. समझ में आ रहा है? Yes or no? हनीफा, आयशा, रिफत? Yes. Yes. अप्रोच भी समझ में आ रहा है? देखिए रिएक्शंस तो आपके नोटबुक में है, बट आई होप यू आर गेटिंग द अप्रोच हाउ टू स्टार्ट इट. है ना, कैसे स्टार्ट करना है आप लोगों को. देखिए वन थिंग इज वेरी इजी टू सी दैट क्लोरोप्रोपेन से आपके पास अगर आपको हाइलोएल्केन से अल्कोहल बनाना है तो aqueous NaOH यूज होगा. ये तो आपको कौन बताएगा? दिस विल टेल यू द रिएक्शन मैप. In that reaction map, you will ask, can I make alcohol from haloalkene? Then you will answer, yes, I can using aqueous NaOH. But the position में आपको क्या करना है? position में logic इस्तेमाल होगा. In the position you have to see 2 1 है, एक position का change है Markovnikov या anti Markovnikov via alkene, Markovnikov और anti Markovnikov. चलिए, let's move to the next one, ethanol to ethyl fluoride. अब देखिए, we had 7 out of 28. कितना percentage आ जाएगा? 7 out of 28 reaction. It is 25% of conversions use Markovnikov और anti Markovnikov. ठीक है, तो ध्यान रखिए, like you have to have a very good expertise in Markovnikovs and anti Markovnikov addition. Yes or no?
हर 4 में से out of all the 4 questions, out of 4 questions, 1 question is always using Markovnikov or anti-Markovnikov, and similar is the case for what? Alcoholic QH. Markovnikov और anti-Markovnikov है तो elimination reaction, that means alcoholic QH तो इस्तेमाल होगा ही होगा. So I hope you understand the importance of these two reactions. Let us move forward. And ethanol to ethyl fluoride. Ethanol to ethyl fluoride. If you had a reaction map, तब वहां पे आपको शायद पता चल जाता कि you cannot make directly ethanol to ethyl fluoride. So you have to go via a halogen exchange method. This is an easy reaction. So you have OH. I will use SOCl2 in order to make chloroethane. Further, I will use what? Any metallic fluoride, है ना? Hg2F2 use कर सकते हैं, right? And any other metal, AgF भी use कर सकते हैं, SPF5 भी use कर सकते हैं, and we will be getting this product here. यहाँ पे we can use PCl5 also. This may show. Done, yes or no? Please tell me, guys. Yes. Propene to propyne. Propene to propyne. We will have carbon, triple bond, CH. स्ट्रक्चर इसका वैसे लीनियर होता है तो हम इसको एक बार लीनियरली बना लेते हैं. CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH. अब यहाँ पे कैसे जाना है इसके बारे में आप लोग बहुत दिमाग लगाइए. हैव यू सीन अ ट्रिपल बॉन्ड इन द होल हैलोअल्केन हैलोअरीन चैप्टर? यस और नो? हैव यू सीन ट्रिपल बॉन्ड? CCl4 डार्क, CCl4 सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट का नाम क्यों याद करके रखे हैं शायद? CCl4 इज अ सॉल्वेंट. कार्बन टेट्राक्लोराइड. पॉलीहैलोजेंस वाले अगर आप लिख लेते तो फिर आपको आ जाता. So Br2 plus CCl. क्या क्या याद करना होगा? So we have to add Cl2 or Br2, then we have to add CCl. Then we have to add CCl4. CCl4 से कौन सा रिएक्शन जरा बताइएगा ना हमको. Yeah. मतलब होगा ना एनसीईआरटी में दिया होगा या फिर नोटबुक में हमने लिखाया होगा कि मतलब हैलो एल्कीन Br2 ऐड करेंगे. Br2 ऐड करेंगे फिर CCl4 ऐड करेंगे. अरे देखिए, So in this case we can add both. in this case we can add both. CCl4 का क्या काम है ये बताइए ना आप. Why you are saying CCl4? या तो आप कहीं से देख के बोल रहे हैं या तो अगर आपने याद किया हो तो आपको पता नहीं CCl4 किस लिए इस्तेमाल किया जाता है. It's just a reagent. Like instead of that we can use CS2 also. So no. Reagent है. No, not a reagent. तो फिर I forgot the name. क्या है सिमिलरिटी CCl4 में और CS2 में? क्या सेम है? Solvent. Sorry, solvent. क्यों क्या मतलब क्यों CCl4? वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते हम लोग? Why not water? Like अगर सॉल्वेंट की बात आती है तो जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर. Yes. आप CCl4 और CS2 में इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? टेल मी. So I don't just. तो फिर आप स्पेसिफाई, जब रीजन नहीं पता तो फिर आदमी को नहीं करना चाहिए ना.
Yes. You don't know the reason. Now listen. Br2 आप बताइए पोलर है या नॉन पोलर है? Sir, non-polar. नॉन पोलर. And water, polar or non polar? Sir, polar. Water is polar or No, no, Huh? sir. Non-polar. नॉन पोलर. चलिए आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. पानी नॉन पोलर हो गया आज. अरे पानी अगर नॉन पोलर होता तो गैस हो जाता भाई, इतना हल्का होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना यहाँ पे कि नहीं है? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव Yeah. है. It will be completely polar. इतना polar होता है कि that it has another name for the dipole moment that it creates hydrogen bonding. It's completely what? It is completely it is completely polar molecule. बहुत ही ज़्यादा polar है. Polar और non polar they will not. देखिए H2O polar और वो भी very. तो non polar और polar not mix. ठीक है. तो जहां से भी आप देख के आंसर बता रहे हैं, जहां से भी आपने छापा हुआ है ना आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा कि पानी हमेशा सॉल्वेंट यूज किया जाता है, और जब पानी नहीं यूज किया जाता तब दे हैव टू स्पेसिफाई व्हाट द सॉल्वेंट दे आर यूजिंग. इसी वजह से टेक्स्ट बुक में वो लिखा रहेगा. आपके सिलेबस में सॉल्वेंट केमिस्ट्री नहीं है. ओके, यू डोंट हैव सॉल्वेंट केमिस्ट्री इन योर टेक्स्ट बुक. ओके, इस वजह से यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई व्हाट सॉल्वेंट. अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो रीजन पता होना चाहिए आपको व्हाई यू आर यूजिंग दैट. इसी दैट इज व्हाई इफ यू लुक एट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, all the chlorine atoms are here, they will cancel the dipole moment. सारा dipole moment cancel हो जाएगा, the net dipole moment will be 0. यहाँ पे भी आपके पास mu net क्या हो जाएगा? 0, non polar. If you look at CS2, CS2 has a similar structure that of CO2, carbon double bond sulfur, double bond sulfur. Now ये भी क्या हो गया है? This is also what? एक dipole moment इधर जाएगा, एक dipole moment इधर जाएगा, they will cancel each other out and the mu net will be 0. Remember the reagent. आप notebook देखिए, वहां पे आप there is one reaction in which we are saying that if I react this with Br2 or something, I will be getting a vicinal dihalide. Br2 से क्या react? I will get one Br here. I will get one Br here. Next, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन. We can use alcoholic KOH. Alcoholic KOH use किया हमने, then what is going to happen? I will make an alkene. But alkene कैसे बनेगा? This Br and this hydrogen will be abstracted. एक से Br और दूसरे से हाइड्रोजन, एक से Br दूसरे से हाइड्रोजन, and what will be getting? पहले इधर से abstract होगा. Wait a second. प्रोडक्ट भले ही सेम बन रहा हो. 1 Br and 1 हाइड्रोजन हो गया. क्या बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट? Br. अब भले ही आपके पास इस वाले रिएक्शन में ऐसे बहुत सारे किताबों ने दे दिया हो कि 2 अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे, यानी कि दे आर यूजिंग अगेन अल्कोहलिक KOH, शायद दे दिया हो बहुत सारे किताबों में. ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस हाइड्रोजन इज रिमेनिंग, दिस हाइड्रोजन इज रिमेनिंग. अब यहाँ पे आपके पास फिर से क्या होगा? दिस Br will be removed and this hydrogen will be removed and you will be getting unsaturation, that is alkene. But please remember, alcoholic KOH practically possible नहीं है when you have alkene already. जब already you have an alkene, so you cannot use alcoholic KOH, it will be not reactive, it will not be reactive. Then what is the better reagent to use? The better reagent to use is, instead of alcoholic KOH, we will use NaNH2. If you remember, I have written the reagents that can be used for dehydrohalogenation are alcoholic KOH, alcoholic NaOH, NaNH2 also. So NaNH2 is a very strong base, very strong base, and rather you can have this one reaction, जो कि बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, but better reaction will be what? Better reaction will be to first use Br2, and in the second reaction you will use 2 moles of NaNH2. Bas, that's it. And you will be getting alkyne here. Alkyne here. ये समझ में आया? Yes or no? Please tell me. First reaction is addition of hydrogen halide नहीं, addition of halogen. Second reaction आपका ये जो है ना NH2 का, this is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation 2 times. रिफत नामना समझ में आ रहा बात? ये सब नोट प्लीज टेल मी. Right? NaNH2. Please remember, whenever you have to do dehydrohalogenation, use NaNH2. Okay? Use
NaNH2। जब भी आपके पास 2 बार करना है, you will use NaNH2। आगे बढ़े। Yes or no, please tell me। Yes. Propene to nitropropane। ये रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, इसके लिए तो मतलब you should not need anything। प्रोपीन रिएक्शन मैप होता आपके पास, आप तुरंत कर लेते। 1 नाइट्रोप्रोपीन। ओके, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपीन। सो वी कैन मेक नाइट्रोप्रोपेन, है ना। अब ये बताइए कि कैन वी मेक ए नाइट्रोप्रोपेन फ्रॉम हैलो एल्कीन। यस, देयर इज अ रिएक्शन इन व्हिच वी कैन यूज। कौन सा रिएक्शन है आपका? चल जा रहा है। ओके, सो देखिए नाइट्रोप्रोपेन आपका बन जाएगा किससे? We can make a nitropropane like this, yes or no? Using what? KNO2 or AgNO2? AgNO2 AgNO2 यूज करेंगे तो नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। और यहां से यहां बना सकते हैं कि नहीं? HBr in the presence of peroxide। ये हो गया 8वां रिएक्शन in which we are using Markovnikov or anti-Markovnikov addition। So first reaction will be HBr, the presence of peroxide। Second reaction will be with AgNO2। रिएक्शंस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हनीफा, रिफत, yes or no? Tell me। Yes, sir. एक स्टेप आप पीछे जाने की कोशिश कीजिए, है ना। यहाँ से एक स्टेप आप पीछे जाने की कोशिश कीजिए तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे मतलब देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, हियर। तो धीरे धीरे क्लिक करता जाएगा आपको। मूव, शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. Yes. प्रोपीन टू प्रोपेन ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन, देखिए सेम टाइप का रिएक्शन है। प्रोपीन है। कैन आई मेक अल्कोहल फ्रॉम हैलो एल्कीन? यस और नो, प्लीज टेल मी। कैन आई मेक अल्कोहल फ्रॉम हैलो एल्कीन? यस और नो। Yes. क्या यूज करते हैं? एक्वस। क्या यूज करते हैं? एक्वस केवच यूज करेंगे तो अरे भाई ये सब रिएक्शंस याद होने चाहिए बिल्कुल आपको टिप्स पे। यहां से यहां जाने के लिए व्हाट इज द रिएजेंट दैट विल बी यूजिंग? टेल मी। एल्कीन से, अरे क्या हो गया? रिफत बताइए, यहाँ पे क्या रिएजेंट इस्तेमाल होगा? सॉरी वेट अ सेकंड, दिस विल बी फर्स्ट रिएक्शन। ये आपका सेकंड रिएजेंट हो गया। फर्स्ट रिएजेंट क्या इस्तेमाल होगा? यस रिफत। I can't hear you, can't hear you, can't hear you. Answer in chat, answer in chat. Those who know, answer in chat. What is the reagent that we'll be using? अरे भाई HCl इस्तेमाल करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ज्यादा HCl कैसे इस्तेमाल कर लेंगे? यहाँ पे HCl इस्तेमाल करेंगे तो क्लोरीन ना लग जाएगा? आप लोग आंसर चैट में आंसर कीजिए। आप चैट में आंसर कीजिए, आंसर करना चैट में कीजिए। हाँ HBr, सिर्फ HBr। रिफत मतलब बिल्कुल जानते हैं आप लोगों ने, हद कर दी है। देखिए सेम है कि नहीं है? अभी तो लिखाया है हमने, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। हनीफा, रिफत, आयशा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Isn't this the same reaction? Yes or Yes, no? sir. Please tell me। फिर ध्यान रखिए। Here we will be using HBr in the presence of peroxide।
फर्स्ट रिएजेंट HBr परऑक्साइड। देखिए पहले हम लोग ने क्या बनाया, पहले आई हैव मेड दिस प्रीवियस प्रोडक्ट, इससे हम लोग क्या पूछ रहे हैं, आई एम आस्किंग कैन आई मेक अल्कोहल फ्रॉम हैलो एल्कीन, व्हाई आई एम आस्किंग हैलो एल्कीन ओनली बिकॉज हैलो एल्कीन इज माय चैप्टर, ओके, to take that reference, can we make alcohol from haloalkene? The answer is yes, using what? Aqueous KOH. Then कैसा होना चाहिए, RX ROH, है ना, कोई चेंज नहीं होता है यहाँ पे, you just have to make what? Aqueous, just have to make aqueous KOH, that's it. जिस प्लेस में आपके पास कार्बन है और जिस प्लेस में अल्कोहल है, सेम वहीं पे आपको Br लगा देना, and that is the haloalkene you will be using to make the alcohol. सेकंड में आप देखिए यहाँ पे जो aqueous KOH लिख लिया, ऐसा ना, प्लीज टेल मी। Yes, sir. टाइम भी खत्म हो गया, देखिए इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो, इथेन टू ब्रोमो इथेन, ये तो बहुत ही आसान है ना। क्या है आपके पास, इथेन इज एल्केन से हैलो एल्केन, मतलब हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग को ये रिएक्शन आना चाहिए। अभी ये रिएक्शन, ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अल्कोहल फेनॉल ईथर स्टार्ट हो जाएगा, अल्कोहल फेनॉल ईथर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके प्रॉब्लम्स रहेंगे, उसके असाइनमेंट्स रहेंगे। फिर जब आप उसको स्टार्ट करने लगेगा उसमें भी आप लोग काहली बरतिएगा और वो भी कंप्लीट नहीं होगा। एक तो हैलो एल्केन पे आप लोग को बैकलॉग लग चुका है कि रिएक्शन में आपके पास है नहीं, रिएक्शन आपको याद है नहीं। फिर अल्कोहल में भी वही होगा, है ना, आधा आप हैलो एल्केन का सोचते रहिएगा, हैलो एल्केन के वहां पे रिएक्शन इस्तेमाल होते रहेंगे, अल्कोहल ठीक से नहीं आएगा। फिर अल्कोहल में भी बैकलॉग लग जाएगा, जब एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड इस्तेमाल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन इस्तेमाल होगा, वहां पे अल्कोहल का बैकलॉग है, उसको कंप्लीट करने के चक्कर में एल्डिहाइड वाला खराब होगा, फिर अमीन वाला खराब होगा। इस तरह से ये साइकिल जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, कि फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर कुछ आता ही नहीं है, ऑर्गेनिक के ओ से बेटर लगता है सर हमको, इतना टफ है, सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या, स्टार्टिंग से मेहनत की नहीं आपने, डे 1 से बोल रहे हैं रिएक्शंस लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन मैप बनाइए, कन्वर्जन्स में वही इस्तेमाल करेगा। और हम अल्कोहल फेनॉल्स में तो इतना एफर्ट डालेंगे भी नहीं, हैलो एल्केन हैलोरीन जो कि इतना छोटा चैप्टर है ना, सिर्फ 2 ही चीज है, हैलो एल्केन हैलोरीन, उसमें आई हैव गिवन ये सब चीज हमने बताया आप लोगों को। कंक्लूडिंग पॉइंट्स कैसा होता है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं तो कंक्लूडिंग पॉइंट्स को आप लिखते जाइएगा, रिएक्शन मैप बनाइएगा, कन्वर्जन्स 30 कन्वर्जन्स है इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा, सारा कराएंगे। आज नहीं होगा ना तो फिर हम नेक्स्ट क्लास भी इसी का ले लेंगे, नीचे स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फेनॉल से नीचे, लेकिन इतना ज्यादा एफर्ट जो है बाकी किसी चैप्टर में नहीं लगने वाला है। उसमें हम बोलेंगे हैलो एल्केन हैलोरीन में ये कराया हुआ, आप नोटबुक देखिए, जैसा कि हम बोलते हैं फ्लिप सम पेजेस, फ्लिप सम पेजेस, फ्लिप सम पेजेस, बिकॉज एक चीज को 2 बार पढ़ा के आपको ज्यादा नहीं आ जाएगा। आप अगर एक चीज को 10 बार पढ़िएगा तब ज्यादा आएगा, दैट मींस यू हैव टू रिवाइज नाउ। कोई नया कंसेप्ट आपको नहीं बता देंगे, आप जब भी पढ़ाएंगे आपको लगेगा हाँ ये तो पढ़ा दिया था सर ने, हाँ ये तो पढ़ा दिया था सर ने, ठीक है। छुट्टियां हैं, छुट्टियों का इस्तेमाल कीजिए, जल्दी से रिएक्शन में आप बैकलॉग सब कंप्लीट कीजिए, और ये जो है ना सारे, आई विल सेंड यू दिस होल थिंग, लेकिन इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या बोलते हैं सोल्यूशन कौन सा है, आपको ये ब्लैंक मिलेगा और फिर वो आपको सारा हमको ऐसे सबमिट करना पड़ेगा कन्वर्जन्स कर, ठीक है। और हमको तो पता लग जाएगा कि आपने छापा या फिर आपने दिमाग लगाया कहीं से। चलिए राइट दिस डाउन, लिख लिया आप लोगों ने। yes, sir. रिएक्शन किया, ये रिएक्शन बताइए किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, बताइए नोटबुक में है कि नहीं है, ये बताइए आप। नोटबुक से देखिए नहीं, सिर्फ नोटबुक में हमको क्या पता क्या रहेगा, है ना, नोटबुक देखेंगे तो तब तो पता चलेगा क्या रहेगा। आप अगर जाइए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, पहला है बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, उसमें का आप हेल्पर हमने लिखा है, हेल्पर के बाद हमने लिखा है मीथेन का रिएक्शन, उसके बाद इथेन का रिएक्शन Br2 के साथ, सेम रिएक्शन। ये भी नहीं कि टॉपिक सेम है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास सेम सबस्ट्रेट है, सेम रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट भी बना हुआ है।
ये चीज मेरे साथ नहीं, मतलब हम एक टीचर है जो बताते हैं, हर टीचर के साथ यही है। नाउ लुक एट दिस, टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। व्हाट इज टॉलुइन? पहले यहीं पे फंसिएगा आप। टॉलुइन क्या होता है? टॉलुइन इज a benzene ring with a CH3 group. Benzyl alcohol. This is benzyl alcohol. बताइए, रिएक्शन में बेंजीन का कोई काम है? आप ये बताइए, बेंजीन कुछ रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है? कोई चेंज आ रहा है बेंजीन में? ऐसा नो प्लीज टेल मी। अरे हाँ या ना, यही तो बता दीजिए। Yes. Yes. चेंज आ रहा है? क्या चेंज आ रहा है बेंजीन में? बेंजीन में क्या चेंज आ रहा है? बेंजीन के किसी कार्बन में क्या चेंज आ रहा है? चेंज तो आ रहा है यहाँ पे। अब आप लोग को ये दिखाएं हम कि चेंज कहाँ पे आ रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। चेंज तो इस कार्बन में आ रहा है ना, बेंजीन के किसी कार्बन में तो नहीं आ रहा है चेंज। यस और नो प्लीज टेल मी। Yes. Yes. अब ये बताइए, ये जो कार्बन है आपका CH3, ये तो आपके पास क्या है? ये हम पूछ भी नहीं सकता हाइब्रिडाइजेशन क्या है। पता है हमको, आप लोग को नहीं बता पाइएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा? 3 सेकंड 10 सेकंड का टाइम है, चैट में बताइएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी। CH3, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर? एक आंसर आया, 2 आंसर आया। ठीक, आई एम हैप्पी विद 2 आंसर्स आल्सो। लेकिन जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि आपको ना, कि क्लास 11 में पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए। हमने हैलो अल्किन हैलोरीन चैप्टर में भी पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया है? बोलिए, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हनीफा, रिफत, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया है ना? इसी चैप्टर में पढ़ाया है कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हैलो अल्किन हैलोरीन में हम नहीं कसर छोड़ते, लेकिन दिस इज विद एवरी बैच। मतलब एवरी बैच क्या, एवरी ईयर एवरी बैच, कि हमको एफर्ट डालना ही पड़ता है। यहाँ पे sp3 होगा, ठीक है? यहाँ पे sp3 होगा, sp3 होगा, यानी कि दिस कार्बन इज व्हाट, इट इज एल्केन। ये क्या है आपके पास? दिस इज नॉट, इसमें एल्केन का रिएक्शन हो रहा है। सो आई एम गोइंग फ्रॉम एल्केन टू हैलो एल्केन, सॉरी आई एम गोइंग टू एल्केन फ्रॉम एल्केन टू अल्कोहल, ठीक है? सो इफ आई हैव टू गो फ्रॉम एल्केन टू अल्कोहल, आई विल गो वाया हैलो एल्केन, ठीक है? और हैलो एल्केन से अल्कोहल बन जाता है। आई नो दिस थिंग, आई कैन मेक अल्कोहल फ्रॉम हैलो एल्केन, एंड फ्रॉम alkene I can make halo alkene also. So पहला क्या होगा आपके पास? The first reagent that we'll be using, it will be सेम थिंग, Br2 आप इस्तेमाल कर लीजिए किसके साथ? HNO के साथ। देन इस वाले रिएक्शन यहाँ तक जाने के लिए व्हाट यू विल बी यूजिंग? यू विल बी जस्ट यूजिंग aqueous KOH। तो यहाँ पे आप जब इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बनेगा क्या? आपके पास जो बीच में प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी CH2Br, है ना? अब फिर से देखिए, ये हैलो एल्केन है, दिस इज नॉट हैलो अरीन। हैलो अरीन के लिए क्या चाहिए? हैलोरीन के लिए यू हैव टू हैव हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, बट इट इज नॉट। ये तो बेंजाइलिक हैलाइड है, इफ यू रिमेंबर, है ना? तो वहीं से आ जाना चाहिए था। बेंजाइल अल्कोहल के लिए क्या चाहिए? बेंजाइल हैलाइड चाहिए, और बेंजाइल हैलाइड आई कैन यूज Br2 and HNO। प्लीज राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस डाउन। Done. लिख लिया सबने? इसमें क्वेश्चन में इज एवरीवन डन? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए बहुत स्पेसिफिक्स है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का, ठीक है? मूविंग ऑन, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइट। इथेनॉल टू ये तो मतलब क्लास में ही कराया हुआ है हमने। अब वही ना कि आप लोग को याद नहीं रहती चीजें। इथेनॉल CH3 CH2 OH,
say CH3 CH2 CN. Here we have 2 carbon atoms. Here we have 3 carbon atoms. यानी कि कहीं ना कहीं क्या इस्तेमाल होगा? What is the reaction for increasing 1 carbon atom? What is the reaction for increasing 1 carbon atom? देखिए CN आपका हालो अल्कीन से बन सकता है, बट यू हैव टू हैव अ हालो अल्कीन व्हिच इज कंटेनिंग CN ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप KCN से रिएक्ट करा दीजिए. ओके, सो इफ यू रिएक्ट दिस विद KCN तो क्या बन जाएगा आपके CH3 CH2 CN. अब ये वाला रिएक्शन तो बहुत ही आसान है. अल्कोहल से हालो अल्कीन क्या यूज कर सकते हैं? SOCl2. बस. Again you have to ask the same question. Can I make nitrile from RX? The answer will be yes. Then you will ask, can I make RX from alcohol? Yeah. Grignard reagent. Sorry, sir, I Grignard. sent it before. ये ध्यान रख लीजिए. To increase one carbon atom. Think of using KCN. लिख लिया आप लोगों ने ये सुनो पिछले में? लिखा कि नहीं लिखा इससे पहले वाला? लिख लिया? अब ये 3 रिएक्शन लिखिए जो नाइट्राइल के हैं, which you will be using इस चैप्टर में. 3 रिएक्शंस हैं, बहुत ही आसान. पहले लिखिए फिर हम समझाते हैं इसको. Write this down first, then we will understand this. लिखिए, ठीक है. देखिए इसको तो याद कर लीजिए आप. H2O डाला है आपने, 1 ऑक्सीजन हियर एंड 1 OH हियर. ओके, you have added H2O. तो क्या होता है यहाँ पे? You will get oxygen, hydrogen, hydrogen. Okay, and then you will get one thing like this. OH H. तो एक तो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, और एक यहाँ से देखिए आप NH3 निकल जाएगा. कैन यू सी दैट? अगर इस पार्ट को देखें तो R C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ से NH3. तो NH3 तो गैस निकल गया. सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या इस्तेमाल करेंगे? पानी. व्हाट विल बी यूजिंग? विल बी यूजिंग वाटर. उसके बाद RMGBr में देखिए आप. RMGBr में R डैश विल बी हैविंग व्हाट? डेल्टा नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे R डैश होगा, ठीक है, एंड MGBr. तो पहले तो ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है, Mg के साथ बॉन्ड बन जाएगा इसका. देन व्हाट वी आर यूजिंग? वी आर यूजिंग H2O. H2O होगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O
और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ निकल जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहाँ पे R लग जाएगा। ये देखिए कीटोन बन गया। सो व्हाट विल बी यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन पानी। सो इस फर्स्ट स्टेप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इस्तेमाल कर लिया पूरा, सेकंड स्टेप में हम लोग डालेंगे वाटर। ओके, सेकंड स्टेप में डालेंगे वाटर, साथ में नहीं डाल सकते वाटर, प्लीज रिमेंबर। 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन सेकंड स्टेप में विल बी एडिंग वाटर। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा रिएक्ट करके निकल गया हो, खत्म हो चुका हो, and there is no more grignard reagent remaining, then we will add water। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे you will have just hydrogens, too many hydrogens, so it will be completely reducing everything। So you will get hydrogen here, hydrogen here, hydrogen here, and hydrogen here, hydrogen here। सारी तरफ से हाइड्रोजन आ गया। ओके, नॉट एक साइड, यहाँ पे एक साइड ये हाइड्रोजन नहीं होगा। ओके, तो CH2 बन जाएगा और NH2 बन जाएगा। CH will carbon will get 2 hydrogens, hydrogen will get 2 hydrogens। okay, and you will making amines। 3 reagents आपको याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला वाला है, पानी डालिए कार्बोक्सिलिक एसिड, which is the easiest one। add water and you will get carboxylic acid। add water on nitrate। इसी पे बेस्ड आपका अगला ये सारा रिएक्शन है। okay, the next reaction, see bromomethane to propanone। so you know that propanone कहां से बनेगा? this will be from nitrile। nitrile will be from haloalkane, है ना। तो haloalkane दिया हुआ, क्या दिया हुआ? ब्रोमोमीथेन, है ना। ब्रोमो मीथेन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्रोमोमीथेन दिया हुआ है, CH3Br। क्या इस्तेमाल किया हमने? सबसे पहला KCN, एंड वी गेट CH3CN। अब यहां से नाइट्राइल से आपको प्रोपेनॉन जाना, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आई विल बी यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप पानी। पहले स्टेप में आप क्या रहे? नंबर 1 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होना चाहिए? प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर देखिए, यू हैव CH3CN, इससे आपके पास वेट सेकंड CN है ना, CN, उससे क्या बनाना है आपको? you have to make CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो यहां तक तो है आपके पास 2 कार्बन। कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए? you have to have grignard reagent of 1 carbon atom, that means you will be using CH3MgBr। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? yes or no, please tell me। from the product can you understand what type of grignard reagent you should be using, whether you should be using grignard reagent of 2 carbon atoms, 3 carbon atoms, 1 carbon atom, yes or no? Anifa, Rifat, all of you please tell me। Yes। है ना। तो you have propanone, here you have 2 carbons, here you have 3 carbons। so एक कार्बन कहां से आएगा? the 1 carbon will be coming from grignard reagent। the first step, and the second step you will be using water। बस इस तरह से दिखा दीजिए, that's it, don't have to do anything else। okay, so you have CH3Br से जाना है हमको प्रोपेनॉन। फर्स्ट विल बी KCN, second step will be CH3MgBr, third step will be water। बस अब ये देखिए ethyl chloride to propanoic acid। again we know how can we make propanoic acid? propanoic acid can be made from nitriles, and nitrile से हमको क्या मिलेगा? नाइट्राइल कहां से मिलेगा? we'll get from RX। बहुत ही आसान है। you have ethyl chloride CH3 CH2 Cl, add KCl, इसको नीचे ऐड करते हैं। यहाँ से हमको तो प्रोबेबली जाना है यहाँ पे ना, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन डाल देते हैं इसको। वो अच्छा ना, तो 1 2 3 कार्बन। यहाँ से आप बनाइए क्या? KCN, you will add 1 CH3 CH2 CN। क्या ऐड करेंगे यहाँ से? we will add water। पानी ऐड किया, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन OH। ओके, ऐसे लिख लीजिए आप लोग।
पहला है आपके पास KCN, सेकंड स्टेप में पानी, बस। शुड आई मूव ऑन? यस नो प्लीज टेल मी। Sir, 1 minute. लिखिए लिखिए। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रोपेनोइक एसिड कहां से बनाएंगे? नाइट्राइल से बनाएंगे। नाइट्राइल कहां से बनाएंगे? हाइड्रोल से बनाएंगे। रिएजेंट्स बस हैं आपके पास ना, ये पहले आना चाहिए आपको। रिएजेंट्स तो याद हो जाएंगे, करते करते याद हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। Retro means backward synthesis. You have a target material and you have a starting material. So you have to go back. Target material कैसे बना सकते हैं? तो think backwards. Propanoic acid की रिएक्शन में क्या याद है? नाइट्राइल अभी हमने पढ़ा। उससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? RX. Done? देखिए फिर से क्या है आपके पास? इथेनोइक एसिड है, ठीक है? So what will be using? Nitrite. यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है ना? नाइट्राइल से हम क्या, नाइट्राइल कहाँ से आ सकता है? नाइट्राइल कैन कम फ्रॉम, नाइट्राइल कहाँ से आ सकता है? नाइट्राइल कैन कम फ्रॉम हालोअल्केन। बेंजाइल अल्कोहल है तो ये क्या है आपके पास? दिस इज अ अल्कोहल नॉट फिनॉल, ठीक है? ये याद रखिए, हालोअल्केन। अच्छा, हालोअल्केन को हम लोग अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो गया रिएक्शन। बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ठीक है? फर्स्ट रिएक्शन विल बी, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट रिएक्शन आपके लिए, ठीक है ना? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे CH2OH, एंड इसके बाद आपके पास आ जाएगा alcohol to haloalkane, SOCl2. Please remember this is what? Alcohol, sp3 hybridized carbon atom, and I will be making CH2Cl. Then my next reaction will be with haloalkane to nitrile, KCN. CN. And then further what I will do, I will add water and I will be making phenyl ethanoic acid. So ethanoic acid, 1 carbon, 2 carbon, and the second carbon will have C double bond OH. So here we are using the number 1 reagent is SOCl2. Second reagent that we are using is KCN. Third reagent that we are using is H2O. Mithun, we will start in a while, okay, Mithun? Okay, sir. Okay. Okay, what about others? Hanifa, Rifat, done? Yes, Hanifa, Rifat, Aisha, Done, sir. done, no? Okay. So let me stop sharing this. Okay, I will send you the whole thing. ठीक है? I will send you the whole thing. जिसमें आपके पास आंसर्स तो नहीं लिखे रहेंगे obviously. We had done अच्छा 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so 7 or 8 are remaining. Okay, 7 or 8 are remaining. Ethanol to but1-ine, which is important. but2-ine is important. Benzene to 4-bromonitrobenzene, ये आसानी से हो सकता है. Aniline to chlorobenzene can be very easily done. Chlorobenzene to nitrophenol can be easily done. Isopropyl alcohol to iodoform, this is important. Aniline to phenol. हाँ, तो इसमें there are around 3 reactions or 4 reactions which can be easily done, and the other 4 in which one is very similar. So you have 3 more important reactions जो कि आपको शायद याद रखने पड़ जाए. Okay. That means we have not done these reactions in haloalkane halorine chapter, but they are based on the 11th standard reactions. Okay, they have based these reactions on what? Some reactions of 11th standard. So those are important. We will do those questions in the next class. That will be on Saturday. Then we will start alcohol phenols and ethers. Okay. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Hanifa, Rifat, Yes, sir. Aisha, Ansha. I hope you understand how important it is to revise daily now, है ना? And to practice the questions daily. And to practice the questions daily, that you have a habit of drawing the structures actually. I just need that you are comfortable in drawing the structures. You don't have to think twice while you are drawing the structures. When you are making the zigzag lines, then you don't have to think that 4 है कि 5 है carbons.
Okay, you have to be that efficient in at least the zigzag line. Then only the confidence will come. Okay, Chali. I hope this has been fruitful. I hope you have got some insight on how to approach the conversions. Yes or no, Hanifa, Rifat, Zaid, and Aisha? Yes, sir. Yes. Yes. So please try all of these reactions. I want the answers for all of these reactions. And please remember, I will know if you are cheating from somewhere else. अगर आप कहीं से छाप रहे हैं, then I will come to know. Leave it blank if you don't know. I will help you out. I'm always there. Message me on WhatsApp. Okay. Message me on WhatsApp. कुछ नहीं आ रहा तो I will take a half an hour class with you only. Okay. But in order to get a bouquet of reward, you have to ask a bit. Okay. You have to ask a bit कि sir हमको यहाँ problem. I will never understand. I will never know what problems you are having until unless you tell me. Okay. So thank you guys. Thank you very much. We'll meet on next Saturday. I hope you are not demoralized. Okay. आ जाएगा. आपने देखा conversions के सारे reactions कहाँ से हैं? Notebook से हैं. Okay. So you just have to know those reactions. And how will you know those reactions? Write it plenty of things. Just write those reactions many times. You will know those reactions. Okay. Chali. We will meet on alcohol, phenols, and ether in the next class. Bye. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you. Hello. Hi, Mithun. How are you? I'm fine, sir. Fine. Okay. Which school are you from, by the way? So I'm currently living in Saudi Arabia. So here there's a CBC school called Al Alia. I study over there. Al Alia is in Riyadh, right? Yeah. Riyadh, no? Okay. I mean, most of the students are like in my batches. Most of the students, or almost everyone is from Saudi Arabia or Middle East area only. Oh, okay. Okay, Al Alia. What chapters are done in Al Alia till now in chemistry? Regarding chemistry, 4 chapters are over. What 4 chapters? Chapter 4, Chapter 2, Chapter 10, Chapter 11. Okay, haloalkane, halorine, alcohol, phenols, ether, electrochemistry, and No, solutions and chemical kinetics. solution is chapter 2. Okay, Yeah. 2 and 3. 2, 3, 10, 2 11. and 4. 4, chemical kinetics. Yeah. Okay, chemical kinetics. Okay. Electrochemistry is not done. No. Haloalkane, halorine is done. Alcohol is done. Yeah. I think you have to choose. Hello, Ayman. How are you? Hi, hello. Hi. Which school are you from, Ayman? International Indian School, Riyadh. Okay, yeah. So in Riyadh, we have done solutions and haloalkane, halorines, alcohols, I think, right? Or only haloalkane, halorine? And solutions. Both. Haloalkane, halorine, and solutions are done, right? Yeah, we're in the middle of haloalkanes and halorines. Haloalkane, halorine is not finished. Okay, okay. Not finished I yet. think we have completed solutions, chemical kinetics. And this is completed haloalkane and alcohols. Okay. So Mithun, आपकी timing fixed हुई है क्या? Like, have the timings been fixed for any other classes, physics, maths, or biology? Sir, actually, I am now having the trial classes for physics and maths also. Okay, so the time has not been fixed till now. Sorry? Is the time fixed, like the day in which you will be attending? Actually, this is my 3rd day in this platform. So the time is from 3 p.m. around.
Physics classes will be at 4 p.m. I'm not sure with maths classes. Maths class. So physics, you have confirmed the timings, right? 4 p.m. to Yeah. 6 p.m. 4 to 5:30 around that. 4 to 5:30. Okay, fine. And what will be the days for physics? Sir? Like, you will not be having 4 to 6 p.m. all like every day, right? Yeah. Actually, I had a class yesterday and the tutors. No, I'm not talking about the trial classes. I'm talking about the regular classes. Sir, actually, I haven't fixed to have the regular. You have not fixed, right? Okay. That's what I was asking. You're not fixed. Okay, fine. Now, there are 2 batches within, okay, for you. And it's your choice now. And then I will give my suggestion, what you should do. There is one batch. Batch A. This batch A, the name is not very much important to you. The timings and the dates are important. So look there. Okay, so batch A, which is 6 to 8. 6 to 8 p.m. on batch A? Monday, Wednesday. Okay. In this chapter, we have completed. The completed portions are solutions and electrochemistry. And on Monday, we are going to start. That will be the first class. Monday क्या पढ़ रहा है? 25 ना? 25. First class of kinetics. Okay. So if you join this batch, then there will be only one chapter, solution chapter. जिसके लिए you will have to watch some recordings and you have to attend extra classes. Okay, this is one thing. Now there are other batches. On all the other batches, we have completed solutions and haloalkanes. You can see haloalkane is going on. Okay, haloalkane is going on. Okay, so you tell me, what do you want to go on with? Sir, So actually, haloalkane- can I tell what's my condition right now in chemistry? Sure. Tell me. Okay, sir, actually, I had already had this unit test before the vacation. Right now, it's vacation. And for all these 4 chapters I had, the thing is, for me, kinetics and solutions, both are on a good level only. My issue is in organic chemistry, basically. So, Organic chemistry. Okay. So you want to join the class of batches which are having organic chemistry, right? yeah. Okay, you will prefer that. Okay, fine. When is your holiday ending? Sir, I have already until August 31st. August 31st. That's fine. Okay. So I will put you in batches in which haloalkane in which organic chemistry is going on. Okay. Okay, sir. Okay. And I will send you some recordings. You watch that before coming to the class. That will be helpful. Okay. I think, but Mithun, for haloalkane, we have to have some kind of, what I can say, hybrid condition in which you will watch lectures and then attend extra classes also. So you have to give some time, okay? Because haloalkane is almost getting completed there. Okay. 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 What about you, Aman? You want to join which? I think you should be. You also want to join any of the batches in which haloalkane and halorine is going on, right? Yes. Yes. Okay. Fine. So I think Monday, Wednesday, 4 to 8 p.m. will be best for you. Let me see how much is done there. There also we have N. Okay, dehydrohalogenations is almost going to be there. So 3 more classes will be there, at least 2 or 3 more classes. I mean, you have to give a lot of time for all of this because physics and maths will be same hoga, no? Aman and Mithun? Have you done? Maybe, I'm not sure. Achha, you have not done trial class for physics? Okay. We have just Achha, before we this have. class. Okay.
So like in that also you have to get some extra classes and recordings, right? Yes. Okay, fine. So, देखिए, in a short little time, in a very short little time, I will teach you guys that is going to help you even if you join this class or not join this class. Okay, that is Iupac nomenclature. Do you have difficulties in writing Iupac nomenclature? Tell me. Sir, for me, yeah. Ayman, what about you? No. No? No. Okay. Can Ayman, you try for this one? Write the name of this molecule. Okay. Mithun, you can also try. Okay. Okay, I can make the complete structure. Maybe you are not comfortable with bond-line structure. CH3. This is acceptable. नहीं फिर भी हम बना रहे देखते हैं. CH2. CH2H. Mithun, where are you from originally? Sir, in India, In India. I'm from Kerala. Kerala. Okay. Which part of Kerala? Ernakulam. Okay. It's near to Calicut or near to Trivandrum? No, it's in Kochi, in the central region. Central Calicut is in region. north. Calicut is in north. Trivandrum is in the south. Okay. What about you, Ayman? I'm from Hyderabad. Hyderabad. Old or new? I don't know actually. Okay. Fine. So you both, okay, Ayman and both of you have been born and brought up in Saudi Arabia or brought up Yes. in Saudi Arabia? I've been born Born and and brought up in Saudi Arabia. second generation Indians, that means, right? Yes. My parents too. Indian. They've been born and brought up here. Born and brought up here, okay. Middle East is a kind of recent phenomenon. I think in US we have third generations also, sometimes fourth generation Indians also there. In Yeah. Middle East, it is generally now second generation. Okay. Aman, have you found the main chain? Yes, it starts from the Can you left. please send in, can you please send in the chat? What is the main chain that you have found? देखिए. Excuse me, sir. Yes, Mithun. Sir, in the formula that you wrote on the right side, it should be CH3, right? Maybe see. My bad, yeah. This will be CH3. Okay. So no, Ayman, you're starting it wrong. Okay. Yeah, and that is the first thing that I want to teach you, and that is the biggest Chain. scam people do while they are teaching Iupac nomenclature. What do they say? They say that first step. Mithun, you must also have heard this, and Ayman, आपने तो सुना ही होगा, है ना? Because you are like comfortable with Iupac nomenclature, that means you have done Iupac nomenclature. And what is the first thing that we do? Identify the Largest Longest chain. Longest chain. यही scam है. Scam number 1. ठीक है? This is the scam number 1. Identify the longest chain. No, not identify the longest chain. The first step that is we are going to do is to identify the functional group. What should we identify? Functional group. Okay.
Functional group. Now, please remember when I write functional group in the context of Iupac Nomenclature. Do you have anything after this class? कोई आपका ये है क्या trial class है क्या? No. Mithun, what about you? Sir, no. नहीं ना, ठीक है, तो I can go. थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम ले सकते हैं आप लोग, है ना? Yeah. नहीं. But when I say functional group, in functional group I mean I will write a list of functional group here, and you will be focusing only on those functional group. Okay, you will be focusing on only on those functional group here. Now listen. The first functional group that you have to remember is oic acid. Abhi to I think Mithun will also know. Oic acid will be used for carboxylic acid. Yes or no, Mithun? Yes, sir. है ना? इसका कैसे होता है? COOH. है ना? At least 11th standard से इतना you have gained some identification thing. है ना? Then Yeah. the next functional group that you have to remember is O8. O8 is used for ester. अब घबराइएगा मत. Ester will be using in the 3rd chapter. Next that we have to use is amide. There are a few functional groups that I am leaving right now because they are not very much used. Okay, amide will be CONH2. CONH2 will be using in the 4th chapter of organic chemistry. CONH2. Okay. Next is nitrite. Nitrite again in the 4th chapter of CM. Next is that we will be using AL, aldehyde, 3rd chapter. CHO is attached. Then we'll be using ketone. For ketone, we have ONE. C double bond O. This is there to be ketone. After ketone, we have OL, alcohol, 2nd chapter. Then we have the last one. The least important is amine. Amine, NH2. Okay. And if none of this is present, then I will write E. Okay. If none. If none of above, then what we'll be using as functional group? Tell me. We'll be using the letter E. The next thing that we have to see is what? It is the unsaturation. Unsaturation means what? Unsaturation means it tells me about the presence or absence of double and triple bond. Single bond के लिए कुछ नहीं बताता ही. It just tells me whether the double bond or triple bond is present. If we have double bond, then we will use this word En. If we have triple bond, then we will be using the word which is Yn. If we have two double bonds, then we will be using di-En. If we have a double bond and triple bond, then we will be using En-Yn. Okay? Because En-Yn by En क्यों आ रहा है पहले? Because E is alphabetically coming before Y than Y. That is why when we have both in a structure, that means we have a double bond and triple bond both, then it will be En-Yn. Let us say we have a double bond and two triple bond, then it will be En di-Yn. I hope you are getting the pattern. Yes or no? Please tell me. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Okay. After unsaturation, we will be looking at the parent. We'll be looking at the parent of the word parent. What is the parent carbon? A parent carbon, there is two things. Parent, first of all, is the identification, then the naming. So for naming, I will tell you, if you have one carbon atom, then it will be meth. 2 ke liye it will be eth. For 3, it will be prop. For 4, it will be but, and so on. I hope you remember. And if it is contained ring, okay, if ring, then add cyclo. Okay. If the parent chain is a ring, then add cyclo before the parent chain. That means it will be cycloprop, cyclobute, cyclopent, cyclohex, cyclohep, and so on. Now, when you have identified the parent unsaturation and functional group, when you have identified, I call it at puff. What we have identified? We have identified the puff. Whatever remaining in the structure is what? It is substituent. This is what? It is going to be substituent. Okay. So for substituent C, there are a few things that you have to remember. For substituent एक तो है आपके पास. If NO2 is present, it will be nitro. NO2 का क्या होता है? Nitro. Okay, nitro. Then there are a few halogens. Halogens that you have to remember. So we have what? We have fluoro,
bromo, chloro, iodine. And if any alkyl group is present, then you will use that alkyl group. That is, for example, methyl agar hai to methyl you will use, है ना, if there is 2 carbon atoms remaining after the identification of phosphate. Or if ethyl is there, then you will be using ethyl. Okay. Now write this down, whole thing. Now we have just 2 more things left: identification of parent chain and numbering. The most difficult part, जहाँ पे logic इस्तेमाल होता है. These are factual things, है ना. COH है तो एक acid होगा ही होगा, कोई और दूसरा केस हो ही नहीं सकता. If it is OH present. Also one more thing, I hope you remember that if I am writing it in this way, then for example, if we have carboxylic acid and alcohol both are present, then the functional group will be what? It will be carboxylic acid and not alcohol. Methone and amine, I hope you know this. Yes or no? Priority hota hai. No, I don't. अच्छा. Okay, fine. पहले लिख लीजिए पहले, फिर हम एग्जांपल से समझ में आएगा. मिथुन, you are okay with some Hindi? Yes, sir. Some I can understand. Actually, like my schooling till 8th standard, it was done in a school which was run by Kerala Welfare and Education Society. So I had many teachers who are from Kerala. I just gained 2 words, that 2 Malayalam one, that is Cheta and Chichi, and that is also because there were 2 siblings in the schools who were teacher, and from that I got Cheta. Cheta means big brother, right? Yeah. So after 8th standard, I went to, I hope you know this, Jamia Millia Islamia. Do you know this university? No, sir. Sorry. No, Ayman, what about you? Sorry, sir. I didn't hear Jamia you. Millia Islamia? Yes. No, Achha, I you know don't. this. Achha, you don't know? No, I don't. In 2019, there were too many protests, right? Achha, you don't know this also? I'm not For really CA, in politics. it was all over the news. I mean, everyone was okay, fine. Sir, That protest means there were many protests regarding the topic, you can say. Which one? CA and NRC. Yeah, that one. I remember, sir. So there were 2 universities that were mainly affected: Jamia Millia Islamia and Aligarh Muslim University. You don't remember this name? Okay. You must be Aligarh, you know, it's famous, right? Same. You have one thing which is in Delhi, Jamia Millia Islamia. There are many. Many people come from Kerala also. I have some friends from Kerala who came to Jamia Millia Islamia for BSc degree. Okay. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Done? Yes, sir. Now write note for identification of note. Okay. The parent should be chosen. The parent should be chosen such that it contains the functional group. If not, double bond, then double bond. If not, then triple bond. If not, then maximum number of substituents. If not, then longest chain. So longest chain to last priority. It is the last priority, longest chain. The parent should contain the functional group. If functional group is not there and double bond is present, then it should contain the double bond. If not, then the triple bond. If not, then the maximum number of substituents. And if not, then the longest chain. We will understand how to do this using the example that we have given till here. I write this down. Next, you write and the numbering. Also follows same hierarchy
hierarchy. What subjects do you have, Mithun and Ivan? Sir, for me, physics, chemistry, maths, English, and computer. Okay. What about you, Ivan? The same, except for the computer PE. Physical education. Nice. Yes. Do you like Python, Mithun, now? Yes, sir. Yes. Python is easy. I mean, you guys are blessed because Yeah, earlier not it C++. should. Okay, you also know C++? No, I said we have heard from the previous batch students, seniors. Uh-huh. It is easier C++ compared to is- C. Python is like very, very, very easy. C++ is like completely different language. I mean, Python, we say that the coding community, actually, the research that I'm doing right now, I don't know whether Ayman knows it or not. There's an institute in Hyderabad, IIIT, International Institute of Information Technology. I have a fellowship there, and in which my project is revolving around drug discovery. And we use ML models to get proteins and to get the ligands of particular targets. And in that we use Python. Like we are heavily like dependent on Python. And sometimes we have to use C++ also. And it gets very weird when you are using C++. Because, and Python, the coding community there, the CS student, they said that Python is not a coding language. It is a pseudocode. It is a pseudocode. Okay. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Right. Wrote the 2 points. Sir, Uh-huh. sir, that numbering Uh-huh. also follows the same hierarchy. That means. So I will explain. Okay. Now let's look at this molecule that we give. अच्छा नहीं लिखा है क्या आपने? लिख लीजिए. Ammon, you are done, na? Yes. Okay. Over, sir, I also. Also, okay, fine. Now we have this structure here. OH. Now tell me, look at the list of functional group. Okay. Now don't think that you will be able to do things with your brain only. You require your notebook now because you don't remember these. So keep them handy. Use them as much as you want. Use them as much. I mean, while you are practicing, जब तक आप exam नहीं दे रहे तब तक तो आप cheat कर सकते हो ना. You cannot cheat. You cannot have this in the examination. But till the time you are not giving the examination, use this as much as you can. As much as you can. Okay. Don't try to overburden yourself. नहीं याद करते हैं पहले. नहीं. Start doing. Okay. Now you tell me, do we have any group which is present in this particular molecule? Which is present in the list of functional group? Is there anything? Yes, OH. OH is there, right? OH is there. So we'll identify the OH and we will separate. Okay, we have OH and we'll write, okay, functional group. Functional group is OH. What is the word we use for OH? Tell me. What is the word that we use? Hydrox. नहीं देखिए हमने वहां पे लिखा हुआ. I have written Alcohol. there. नहीं, not alcohol. Oil. See, I have Oil. written there. OL, very good. What do we use? OL. Okay. Now tell me. Achha, one thing I forgot to tell you guys. If we have double bond, then EN, triple bond, then YN. If we have no double and no triple bond, then we will use AN. Okay. If we have no double or no triple, then we will use AN. Now you tell me, is there any double or triple bond here? No. No. Okay. So the word that we'll be using will be AN, right? Yes or no? Correct? Yeah. For unsaturation. Next is parent. Parent. Okay. A parent, what I said, it should be containing, it should be chosen such that it contains functional group. That means this carbon should be present. This carbon atom should be present in the parent chain. Yes or no? Please tell me. Correct? Mithun, Ayman? Yes, sir. Yes or no? Ayman, Yeah. what about you? Yes. Yes. Now I will go above where I see carbon. The next carbon atom is here. When I go to this carbon atom, I see that I have a junction. I can go either right or left. I cannot go both the direction. Now I will choose that direction in which we have more number of carbon atoms. But as I see, I have
same number of carbon atoms in both the directions. So I will be using this direction. We can use anything. Done? Yes or no? Please tell me. Parent, Okay. how many Yes, sir. carbons are there? 4. How many carbons? 1, 2, 3, 4. Beautiful. Now we will do the numbering also. So I said that it follows the same hierarchy. Same hierarchy means the numbering should start from that carbon atom which is nearest to. Numbering starts from the carbon atom which is nearest to the functional group. If not, then बताइए. If not, then look at the criteria for parent. क्या criteria है? Double bond. If not, then double bond. If not, then Double bond. triple bond. If not, then substituent. Okay, then substituent. I know. So we'll start the numbering from which carbon atom is. Ayman, you want to say something? No. Sir, it's me. Mithun, बताइए. So here they are talking about nearest to the functional group. So here it is OH, and the carbon to which will be the carbon from which we start numbering, because it has a functional group. And in the Correct. absence of functional group, we'll be looking for the carbon having double, triple like that, right? Yeah, correct. Exactly. Okay. Okay. 1, 2, 3, and 4. है ना? So we have numbered it. अभी numbering छोड़ देते हैं. Now what we are saying? We are saying what is substituent? Substituent. Anything left. Wait a second, not write anything. Whatever remains for a formula. Whatever remains after identification of, ID means identification of puff, is substituent. That means puff is what? Parent unsaturation function. Once we have identified that, whatever is remaining. So what is remaining here? That we have not circled or something, we have not highlighted. We have circled this, and what is remaining now? This part is remaining. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes. Okay. So this one is this substituent. A substituent has how many carbons? Tell me. How many carbons are there? 2 carbons. Yes. Yes or no? So what is the word for 2 carbon? Eth is the word for 2 carbons, and YL we add YL just to show that it is substituent. Okay, we have 2 carbons. The name for 2 carbon is eth, and YL shows that it is a substituent. So our substituent is what? It is ethyl. Clear? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Now what we have to do? We have to do numbering. Numbering is done for. We'll number the substituent. Parent को तो number नहीं कर सकते. Why we cannot number the parent? Because the parent में तो number किया जाता है. Like we have to add the numbers on the parent. So parent is not numbered. Unsaturation is numbered if we have double or triple. So we don't have a double or triple. That means we'll not number it. Functional group is numbered. Okay. So except parent, everything is numbered. Okay. And unsaturation we have, और functional group में आपके पास condition है. Functional group अगर कोई हो तो, अगर unsaturation हो, if we have unsaturation, we don't have any unsaturation. There is no double or triple bond. That means there is no unsaturation. Okay. So we'll not number it. Functional group, if it is present, we have to number it. If it is not present, we will not number it. We'll number what? Number the substituent. The substituent is in the second position, 2-ethyl, and alcohol will be 1-ol, and you just write it like this: 2-ethyl butane 1-ol. 2-ethyl butane 1-ol. Or you can just write 2-ethyl butanol. है ना? आपको पता होगा, like one can be written and it cannot be written also. I hope you have gained a bit more perspective on Iupac nomenclature now, and you will be a bit more comfortable with it. Yes, sir. Yes. So now, in this method, you will identify and you will be focusing on one thing at a time, and you will be focusing on the same things in different questions also. Okay. So the pattern here, okay, and the method here, it doesn't change according to the question. But again, one thing is that 95% of this question, 95%, 99% of the question that you have in NCERT, it will be made through this particular steps what we have followed here. Okay.
So you don't have to worry now. You will start with functional group, then move to unsaturation, then to parent, and then to substrate. And you know how to number it also, how to choose the parent also. Okay, Ayman and Mithun, is that clear? Yes, got it. Yes? Yes, sir. Okay. So आप दोनों को हमने क्या बोला था? भूल भी गए. I think Monday was the time we fixed, na? For both of you. Both of you have to do Halloween, na? So Monday, Wednesday for chemistry, 4 p.m. to 6 p.m. Okay, Monday, Wednesday chemistry, 4 p.m. to 6 p.m. And I will give you some lectures. आप उसको